share my screen. हमने स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी है, राइट? स्पीकिंग सैम्पल। Yes, ma'am. स्पीकिंग सैम्पल। अच्छा, कौन सी कैटेगरी के साथ हम जाना चाहेंगे फर्स्ट? Experiences try करें मैम. एक्सपीरियंसेस के साथ एजुकेशन है, कल्चर एंड रिलीजन, एक्सपीरियंसेस, फूड, फ्रेंड्स एंड फैमिली, हेल्थ एंड वेलनेस। ओके, लेट्स टॉक अबाउट मनी। Why this is not working? कुछ है ही नहीं, हमारे पास मनी है। What is your favorite type of weather and why do you prefer it over other kinds? So हमें वेदर के बारे में बताना है, हमारी फेवरेट वेदर कौन सी है एंड हम इसे दूसरों पे प्रेफरेंस क्यों देते हैं। So let's brainstorm and then हमने 3 मिनट तक इस पे स्पीकिंग करनी है। टॉपिक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. मेरी आवाज आ रही है? Yes, ma'am. अब आपकी आवाज आ रही है. मैंने पूछा है कि टॉपिक क्लियर हो गया सबको? हमने वेदर के बारे में बात करनी है and क्यों हम इसे प्रेफर करते हैं दूसरे वेदर्स में, ये हमारा क्वेश्चन है। यस मैम, क्वेश्चन क्लियर हो गया है। लेकिन अगर पहले इसको उर्दू में आप थोड़ा सा डिस्कस कर लें तो आई थिंक सो थोड़े आइडियाज मिल जाएंगे, क्योंकि मैं इसी के बारे में सोच रहा हूँ। या तो हम क्लाउडी वेदर की बात कर सकते हैं या फिर जैसे हम यस एग्जैक्टली वेदर, जैसे किसी को जो है वो सनी सनी तो है, आई डोंट नो, बट किसी को क्लाउडी वेदर पसंद है, किसी को रेनी पसंद होता है। सो हम वेदर इस तरह हम बात कर सकते हैं कि आपका फेवरेट टाइप ऑफ वेदर कौन सा है एंड आप उसे दूसरे जो काइंड्स हैं उन पे आप प्रेफरेंस क्यों देते हैं। जैसे आपको अगर क्लाउडी पसंद है तो
सनी पे आप उसको प्रेफरेंस क्यों देते हैं? उसके पास हमने रीजंस बता देनी है, देन हमने एंड पे कंक्लूड कर देना है। कि हम सब अपना टाइम लेते हैं, थोड़ा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं एंड देन वन बाय वन जो है उसको प्रोसीड करते हैं। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। Weather has undoubtedly a huge impact on a person's mood. And if I like to talk about my favorite type of weather, then it is rain. Uh, the reason why it is my favorite type of weather is because we usually find greenery around our surroundings, and the weather becomes soothing when it rains. Also, the sound of rain is a little, what you can say, harmonious, and it elevates our moods. Moreover, uh, in a rainy season, uh, people love to enjoy different kinds of foods. Uh, for example, most of the people enjoy having a cup of coffee, also have some platter of spicy meals with them. And my preference over to other weather is that the rainy season comes with it, along with many benefits. As it rains, so the crops get benefited from the rain, and the plants actually have a healthy dose of water when it rains. Also, the rain is a symbol of blessing from Allah Almighty. So, uh, concluding this, uh, as compared to my preference to other weathers like sunny and cloudy, rain has a special impact on humans, and not only humans but all the creatures in the planet. So, in conclusion, I would say that um, weather has undoubtedly a huge significance in our lives, and it imparts a great role in our society in a way that it actually benefits humanity. So that's what I would say about having a good weather or my favorite type of weather. That's from my side. And now it's for the review. एज ऑलवेज गुड अटेम्प्ट। और बस मुझे ये लगा कि मतलब आपको भी ना आइडियाज इकट्ठे करने में और उन्हें आपस में कनेक्ट करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी आई है। और Yes, बाकी ओवरऑल आपने काफी अच्छा परफॉर्म किया। yes, yes, yes. ये बिल्कुल ही इशू था। And और किसी का कोई कमेंट लाइक
ग्रामेटिकल मिस्टेक वगैरह या कि हम वोकैबुलरी अच्छी यूज और कर सकते थे? मैम आई थिंक आपने, मेरी नज़र में तो कोई ऐसी ग्रामर मिस्टेक नहीं गुजरी जो आपने की हो। तो मतलब दैट्स मैं तो यही कहूँगा कि आपने थोड़ा सा बस अटक के बोला है, लेकिन बाकी जो बोला है वो बिल्कुल ठीक बोला। दैट्स बिकॉज ऑफ द क्योंकि मुझे आइडिया जनरेशन में प्रॉब्लम हो रही थी। सो यस, द रीजन पॉइंटेड आउट बाय सर जुनैद। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली, तो सोचने में टाइम लगता है ना। यस यस। ओके। और इसको करना चाहेगा आप सर मोहम्मद श्योर। ओके, पहले कोई और करना चाहता है तो भाई। सर मोहम्मद आसिफ, आप स्पीक करना चाहेंगे प्लीज? एम आई ऑडिबल टू यू? इसके अलावा मैम आलिया है। मैम आलिया, आप ट्राई करना चाहेंगी? आई थिंक मैम पहले मुझे ट्राई कर लेना चाहिए ताकि मेरी सिंपल सी इंग्लिश देख के बाकियों में भी हौसला आ जाए। ओके ओके, प्लीज गो अहेड। श्योर। I love rainy weather the most. The sound of raindrops falling and the cool breeze create a peaceful and relaxing atmosphere. I prefer it over other types of weather because it makes everything feel fresh and calm. The rain also gives me a good reason to stay indoor or enjoy a hot cup of tea. It's a break from the usual busy day, and I enjoy the quiet time it brings. यस सर, आप और भी बोल सकते हैं, आपने बहुत अच्छा बोला है। प्लीज एलाबोरेट इट। आई थिंक मेरी तरफ से इतना ही। थोड़ी सी इंग्लिश ट्राई खत्म हो करें, गई मेरी। थोड़ी सी ट्राई करें, थोड़ी सी ट्राई करें, उसी को एलाबोरेट करें। जो लास्ट था कि आई एक्चुअली prefer sitting at the comfort of my couch या having a cup of tea. मुझे इसके बारे में सोचना पड़ेगा। एक और ट्राई ले लेता हूँ, इतनी देर तक कोई और पर्सन चलिए ठीक है, थोड़ा सा ठीक है। पार्टिसिपेट कर। सचिन ने प्लीज ट्राई लेना चाहेंगे? आप ही रह गए, आप सबसे मैंने पूछ लिया है। ओके मैम, मैं ट्राई करता हूँ। बस मुझे जरा आइडियाज कलेक्ट करने दें, 30 सेकंड्स दें ताकि मैं प्रिपेयर हो। श्योर। ओके, आई एम स्टार्टिंग नाउ। यस प्लीज। Weather is actually the state of atmosphere uh, which appears for a short time, unlike the climate, which lasts for a longer time. Uh, there are several kinds of weathers, uh, like some are sunny. They have also their types like partly sunny, cloudy sunny, etc. There are also the weather of cloudy and windy, rainy and snowy. Out of
out of these, the most favorite weather, kind of weather to me is cloudy. It is because the cloudy weather stable the environment. If you experience cloudy weather in summer days, you feel much better uh, to work, and you can do your tasks more easily and more productively. These weathers have a huge impact on human behaviors, uh, as these weathers plays a vital role of changing the mind state, and make the persons able to work more effectively. The other thing is, I prefer it because as I lived in an Asian country which have a high temperature more than more than half a year, and these partly cloudy weathers are blessings to us. It is because they normalize the severe temperature of summer, and make the persons more comfortable, and make them more enjoyable to do their tasks in their daily routine. Yes, this is it. Well done, Sir Junaid. Was a great attempt. Yes, your ideas were very, you can say, new. Yes, they were very good. So, Thank you, okay, ma'am. ma'am Alia, would you want to give it a try, Yes. please? Okay. क्वेश्चन समझ आ गया आपको? I think so. I understood the question. Okay. I think I like autumn season because because of the weather that it does not have a high temperature or a very low temperature, and we do not need to wear something like a sweater, or we do not need to any other resources in which we have to like cooling system like a fan or AC. We do not need, because the temperature is already in moderate. uh, yeah. And beside this, we have a lot of a lot of fruit which is coming, like apple, bananas, in which it feels it gives the feelings of that winter is coming, and we are we feel like we are getting out of the scorching weather of the summer in which we are living in the Pakistan, and it is really uh, it's hard to bear the summer season in Pakistan. So therefore, and in if we compare with the winter season, we have to wear something like sweater all the time, or we have like uh, we must have the gas in order to heat up the room. So therefore, it is a little bit extra effort in which we have to put in order to bear the environment, in order to bear the weather. So therefore, that moderate temperature in which we can get in summer and no in spring and autumn, but the spring gives us a feeling of that summer is coming. So therefore, it is quite somehow frightening. So yeah, I prefer autumn in that cases. Ma'am Alia Ali, it was a good attempt, and I think it अच्छा was मैम, was अगर आप इजाजत दें तो मैं कमेंट सेट कर दूं। जी आई जी आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है मैम शाज़मी। आई थिंक आपके माइक का कोई इशू बन गया। अच्छा मैम आलिया, अगर आपके सेंटेंसेस पे थोड़ा गौर किया जाए ना, मतलब आपकी स्टोरी पे सारा कुछ, तो
आपके सेंटेंसेस भी बहुत बेहतर हैं, और आपने बोला भी काफी हद तक ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन की और आपके आंसर की बात की जाए, तो मेरे ख्याल में अ, आप थोड़ा सा ना वो टॉपिक से हट गए। आपने सीजन्स की बात कर दी, क्योंकि वेदर जो है, ठीक है, उसमें हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल रेनी डेज हो गए, ठीक है, सनी डे हो गया, उसके बाद क्लाउडी वेदर हो गया, ठीक है, और वो वेदर हो गया जिसमें हमारे पास बर्फबारी हो रही होती है। और इसके अलावा और कौन से हो सकते हैं, मतलब ये वेदर्स होते हैं, ठीक है। सीजन्स जो है वो डिफरेंट चीज है। तो बाकी आपने बिल्कुल ठीक बोला, मतलब अगर आप टॉपिक पे रह के बात करें तो आप अच्छा स्कोर ले सकते हैं। Okay, I will. Okay, I might didn't get the question. यस, इट इज 100% नेचुरल। समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि मैं टॉपिक से हट के किसी और चीज को डिस्कस कर देता हूँ। तो इट इज 100% नेचुरल। बस ये है कि डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, आप उसको बार बार अटेम्प्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी ग्रेड अच्छी हो जाएगी। तो मैम शाज़मा, आप कोई कमेंट ऐड करना चाह रही हैं? ये बाकी पार्टिसिपेंट कमेंट ऐड करना चाह रहे हैं तो प्लीज़ गो अहेड। तो जितने आप कमेंट्स देंगे उतनी अच्छी बात है, मैम आलिया उतना ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, प्लीज़। ओके मैम आलिया, आपकी आज आई थिंक ये फर्स्ट क्लास थी, राइट? Yes, it was my first class. ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली अप्रिशिएट योर करेज टू स्पीक, ठीक है, टू स्पीक अप। आप फर्स्ट क्लास में ही आपने ये एज अ चैलेंज लिया है कि आई हैव टू स्पीक। एंड जिस तरह से सर सामा ने मेंशन किया, यस, इट विल बी ग्रेजुअली इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन को आई थिंक हमने सही समझा नहीं था, तो दैट्स व्हाई हम थोड़ा सा डेविएट कर रहे थे अपने आंसर में। तो इंशाल्लाह आप अगर प्रैक्टिस करती रहेंगी तो ये चीज़ आपकी विद टाइम जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। एंड यस, इट्स टोटली नेचुरल, सबके साथ ही होता है। बट ओवरऑल I applaud for you for your participation, and yeah, it was your first class, so best of luck for the later classes. Though our session will end this week, but you have the recordings, so आप recordings check कर सकते हैं if you are interested in giving Duolingo. All right. Okay, will this class be continue or further? Like, will Uh, it be continue after the session if it is ended? Will it renew start? Actually, this is our last week. Uh, we have a course of 6 weeks, so this is the 6th week, and it's day 3. So if you're interested in the Duolingo stuff, you can see the recordings while we have our recurrent IELTS classes, so you can join them as well. But for Duolingo, we wish you all the best, and you can see the recordings. That's what like I am saying, because it's for you. It's your first class, so I just told you prior hand. All right. So don't worry. Just have your look at Okay. the recordings. Okay, thank you. Thank you. You're welcome. Okay. सर जुनैद, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? यस मैम, मैं 2 पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा। एक तो जैसे मैम आलिया की आज फर्स्ट क्लास थी, बट फिर भी उनकी वोकेबलरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। शायद उन्होंने पहले प्रैक्टिस की है, बट ऑब्वियसली उनके पास ये प्लस पॉइंट था कि उनकी वोकेबलरी स्ट्रॉन्ग है। और सेकंड ये कि बस स्ट्रक्चर पर वर्क करने की ज़रूरत है, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किस तरह से हमने अपने आंसर को स्ट्रक्चर करना है और उसके बाद फिर उस पर बोल। Okay, Ma'am Alia, you have the points. So keep up the good work. Yes, हम next पे move करते हैं। Okay, so it's about an animal that you find fascinating. How do you find interesting? What do you मैम find? मुझे 1 मिनट मिल सकता है? जी 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 जी, sure sure. अच्छा सर, संतोष कुमार, आप
अच्छा वो सेशन से ही चलेगी जी, प्लीज कंटिन्यू करें। Okay. So, describe an animal that you find fascinating. What do you find interesting about it? So, हमने एनिमल के बारे में बताना है, हमें क्यों वो fascinating लगता है. I think the synonym of fascinating is wonderful. Like to be amazed. I think that's what it is about, fascinating. Am I right? Just to confirm with you people, am I right? सॉरी मैम, मुझे तो आपकी समझ नहीं आई कि आपने क्या कहा इंटरनेट की वजह से। Okay, okay. तो Uh, किसी और पार्टिसिपेंट को आई है या फिर मैम की तरफ इशू? आई ठीक डोंट है. नो। Okay. I was actually asking कि fascinating जो है उसका synonym I think fascinating is of some wonder. ठीक है, fascinate करना कि amazed हो जाना या wonder में चले जाना. So यही इसका synonym है. ये इससे भी कोई बहुत most relevant हमारे पास synonym आ सकता है. It's extremely interesting. अच्छा, okay, great. ठीक है, extremely interesting. So हमारे पास एक एनिमल हमें डिस्क्राइब करना है जो एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग है. फैसिनेटिंग मींस एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग. एंड व्हाट डू यू फाइंड इंटरेस्टिंग अबाउट इट. ठीक है, अच्छा मतलब हमने एनिमल के बारे में ही डिस्क्राइब करना है कि हमें क्यों वो इंटरेस्टिंग लगता है, फैसिनेटिंग लगता है, या उसमें ऐसी क्या चीज़ है जो हमें इंटरेस्टिंग, जिसकी वजह से वो इंटरेस्टिंग लगता है. सो ठीक है, हम इस पे थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्म करते हैं एंड देन हम फिर वन बाय वन जो है वो स्पीक करते हैं इस पे. मैं एक ट्राई लेके देख। Yes, sure. Yes, sure, sir. Wolves are fascinating animals that I find very interesting. They are strong, intelligent, and live in a family groups called packs. What I find most interesting
about wolves is how they work together to hunt and take care of each other. Each wolf in the pack has a role, and they communicate with each other through their body languages. Uh, this teamwork and their ability to survive in the wild make them truly incredible animals. अच्छा, वो जो आवाज निकालते हैं उनको क्या कहते हैं? वो मेरे माइंड में नहीं आ रही. How? I think how it is. Yes. Howls and body language. Yes, that's all from the side. Okay, well done, Sir Zama. It was a great attempt. All right. So actually, I want to talk about cats, but I am not finding the keywords what to say about them. Like they are lovable creatures. They are warm. Like what is their unique characteristics that you people might have in your minds? अगर कैट्स को आप थोड़ा वो फील कर रही हैं कि कैट्स को लेकर चलना थोड़ा मुश्किल है, तो आप पाओ या पॉट को लेकर चल सकते Okay. ठीक है. हैं. और फिर जो उनके बेबीज होते हैं, फिर उनसे आप बिजनेसेस कर सकते हैं, तो सेल आउट कर सकते हैं किसी अच्छे पर्सन को. तो और काउ से दूध भी मिलता है हमें, ठीक है. हम फिर से गोश्त भी हासिल करते हैं. उनकी खाल जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है. जो काउ वेदर है वो तो वैसे ही काफ़ी फेमस है ना, इससे काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स बन जाती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती है. So, well, this is an interesting question. Uh, Animals are a great creature of or what I can say a wonderful creature of God. I like a lot of animals, or I find a lot of animals fascinating and captivating, but the one I would like to talk about here is dog. And why the reason why I find interesting, the reason why I find dogs interesting is because these animals are very loyal and faithful. Uh, Dogs actually have a very what you can say loving nature that makes them stand out among all other animals. Uh, Moreover, as a pet, you can uh, just have them in your homes and they don't require special treatment like other animals, such as buffaloes and say goats. Um, Boys also uh, also are your great companion when it comes to jogging. They uh, very much like about it to travel with you and to actually accompany you in your exercise routines. Um, Additionally, um, dogs are very uh, good natured. They are they actually safeguard you from your enemies and uh, they actually do not forget you in uh, tough situations and they are the protectors of your homes in the villages mostly where people have a lot of difficulties in protecting or safeguarding their homes from the thieves. So yes, that's what I will say about the dogs. Okay, so let's have my review from Ma'am Alia Ali. Ma'am Alia, are you listening to me? Ma'am Alia, am I audible?
Yes. Okay. Okay. So can you review my like speaking, any improvement, any vocabulary that I should have used, something like this? I think you speak about this topic very well. About and your coherence was also amazing. Uh, that why do you like about the animals that you choose the dog, and you said about it that you like because of loyalty. This loyalty, I think, yeah, and the vocabulary that you use also a good range. Mm. Okay, yeah, your that was the just I want to say. Okay, Ma'am Alia, thank you for your input. Any other participant, Ma'am Mamuna has joined us also. Ma'am Mamuna, would you want to have your input or any improvement? You did pretty well. I think your ideas are well organized. Okay. Sir Sama and Sir Junaid, any any improvement, any mistakes, anything? मैं तो कोई गलती नहीं पकड़ सका। मेरे ख्याल में आपने काफी अच्छा बोला। नहीं, मुझे मजा नहीं आया एक्चुअली, कोई गलतियां नहीं निकली हैं। ओके, ठीक है। सर जुनेद शायद कुछ कह सके, वो तो मीटिंग में नहीं है। आपकी चलेगा। आवाज सर उसामा बहुत ही कम है, या मेरे एंड पे कम है? यस, अब ठीक है। यस यस बट एक्चुअली मैंने सर जुनेद को वो नाम लिया था, तो फिर मैंने देखा कि वो मीटिंग में ही रहेगी। ओके ओके ओके, यस सर जुनैद। ओके, ठीक है। कोई और ट्राई लेना चाहे? मैं मुन्ना, आप ट्राई लेना चाहेंगी प्लीज? Sure. प्लीज गो। I am drawn towards a dolphin because of their remarkable problem solving, their sophisticated nature, and strong social bond. I never had the opportunity to had a pet like dolphin, but I observed them in aquariums and at mm, at seas. I I'm drawn towards dolphins because they have a remarkable intelligence, and they use echolocation to navigate and hunt under the water to to target their food and other stuff. And because of the playful and lively nature, they uh, they exhibit strong qualities, and they show uh, good um, uh, the good and playful, I would say, stunts in to other people, so that they can enjoy their time in seas and aquariums. And due to these reasons, I think that dolphins are lovable, and they are very sophisticated creatures among all the animals. Great, ma'am Muna. By the way, this was an addition to my knowledge that dolphins are the great problem solvers.
right? Is this their characteristics? Yes. All right, all right. I think it's dolphins are national animal of which country? I'm forgetting. I'm not sure about this. Yes, they are actually likable in I think China or what I can say in Singapore or Indonesia. But okay. Uh, Ma'am Alia, would you want to have a try? Okay. I I like the animal which is fascinating for me is a cat because of the jolly natures of the cat and the attitude that they have that like when they are walking around or playing something like especially when when the cat is playing with any source of ball or something like a thread, it really feels like it really looks very cute while playing something was. And the most amazing thing when I just watched some videos about the cat that whenever they are just like playing with the mouse, even although then they can also eat. But again, sometimes when just I see some kinds of videos in which they are just playing with a mouse, it really seems like Tom and Jerry in which they are just playing. And yeah, and and one more thing that I just really like about the cat is that when uh, they are also somehow uh, cute in which they want something like the way that they communicate with us like a meow, and it really looks so cute. And beside this, uh, yeah, that's it. Okay, Okay, did I talk very less? Ma'am Alia, actually you put great words like joyful. Yes, this creature is very joyful. Cats are very joyful. So yes, this is their characteristics. So we explain. Very good. And anybody else can have their suggestion or input. And another point I would like to add, Mamalia, you actually you are a great storyteller. Uh, isn't correct? It might be, but I just somehow practice about it. All right. Because these questions are all about you. How can you made a scenario and you actually tell a story? So actually, you did a great job in this regard. So, okay. Thank you. Yeah, you're welcome. Sir Sama, can you please lead the other part of the session because I have to leave actually. Sir Sama, are Yes, you sure. Yes, ma'am. Sure. okay? आप Thank कर you. सकते हैं, no problem. Thank you. Thank you. Ma'am. आप प्लीज मुझे दोस्त बना दिए जाइए.
मैम आलिया, आप तो क्या ये बता सकती हैं कि आप पीएस की स्टूडेंट हैं या आपने पीएस कंप्लीट कर लिया है या बस कर रही हैं? Okay, I have done my master recently, so इन which I'm सब्जेक्ट? now okay. Are you guys undergraduate students or graduate students? Actually, I recently completed my MS degree in computer science, and now I'm preparing for PhD scholarship. Okay. I also recently just done my master. That's great. तो क्या आप थोड़ा सा अपनी प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं कि अभी तक आपकी सीवी के अंदर क्या क्या चीजें हैं? Not quite much because I've never done any sort of a job or any internship. So yeah, just only graduated from. I just only graduated from bachelor's and then just done my master. Not that much. Besides this, I have not done anything else. So therefore, I just ये अगर joined आप the. कुछ So therefore, I यस just यस तो मैं joined थोड़ा सा the. आपको गाइड कर सकता हूँ। Yeah, yeah, sure. अब देखिए, हम मोस्टली जो टारगेट कर रहे होते हैं ना हाईकोर्ट पे, वो कर रहे होते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज। ठीक है, और अमेरिकन यूनिवर्सिटीज इस वक्त दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, सबसे ऊपर है। तो मतलब फिर इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे होते हैं कि वो अमेरिका को टारगेट करें। ठीक है, तो हम भी अमेरिका को टारगेट कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हमें अपनी सीवी के अंदर ऐड करना पड़ती हैं। ठीक है, ताकि प्रोफेसर्स जब हमारा सीवी देखें तो उनको लगे कि ये बच्चा जो है एक्सेप्शनल है, सबसे हटके है। ठीक है, तो उसको सीवी को बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि हम इंटरनेशनल कंपटीशंस में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे विन करना ज़रूरी नहीं है। तो इंटरनेशनल कंपटीशंस के अंदर जाने से क्या होता है कि हमारा जो नॉलेज अबाउट लेटेस्ट टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज है वो इंक्रीज होता जाता है। ठीक है, हमारा इंटरनेशनल सर्कल बनता है। ठीक है, फिर हम को इम्प्रेस करने के बाद उससे LOR ले सकते हैं। ठीक है, अब इंटरनेशनल LOR और लोकल LOR की वर्थ में बड़ा डिफरेंस है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपको मुझसे LOR चाहिए, आप किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी बंदे को ढूंढ के मुझे अप्रोच कर सकती हैं। ठीक है, जिसको मैं इनकार ना कर सकूँ, तो आप इजीली मुझसे एलवार ले सकती हैं। लेकिन इंटरनेशनल पर्सन जो है वो सिर्फ उसी कंडीशन में आपको एलवार देता है जब आपने उसके साथ काम किया हो और अच्छा काम किया। ठीक है, इसीलिए पूरी दुनिया इंटरनेशनल एलवार्स पे ज़्यादा बिलीव करती है। तो अब इंटरनेशनल कंपटीशंस के अंदर जाके आपको एक्सपीरियंस मिलता है, आपको प्रोजेक्ट मिलता है अपने सीवी के अंदर ऐड करने के लिए, आपको एलओआर मिलता है। ठीक है, अचीवमेंट मिल गई तो वेल एंड गुड, आपका अचीवमेंट वाला सेक्शन भी आ जाएगा, वरना ये चीज़ें भी इनफ है। ठीक है, उसके तो इससे ऑटोमेटिकली आप 4-5 हैकाथॉन्स में जाएंगे और आपका अच्छा खासा सीवी बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये है कि आप सेशंस के अंदर अब जो गोरे हैं, ठीक है, जो इंग्लिश है, वो क्या किस चीज़ को ज़्यादा अच्छा समझते हैं, वॉलंटियर वर्क। अगर आपने जितना ज़्यादा वॉलंटियर वर्क किया हुआ है वो समझते हैं कि ये लीडर है। ठीक है, अगर हम इसको यूनिवर्सिटी के अंदर बुलाते हैं तो ये खुद आगे बढ़ने के साथ साथ बाकी स्टूडेंट्स को भी साथ लेकर चलेगा। ठीक है, अगर आप किसी Okay. जाइंट In fact, टैक्स के अंदर जॉब। यस। um, I applied for in order to teach Python data structure and algorithm. Although I have not done a lot of lead code, but again, I have. I can solve the easy or somehow the medium questions. So therefore, I just applied, but I have not response. I have not get any response from the I got guru that, yeah, whether can teach or not. So ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, आपने फॉर्म कब फिल किया? uh, more than a half, no, 1 week before. ओके ओके, 1 वीक बिफोर। तो एक्चुअली कुछ कोर्सेज हैं जो क्यू में है। ठीक है, जैसे ही वो कोर्सेज अनाउंस हो जाएंगे इंशाल्लाह आपके साथ कॉन्टैक्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, और इन दैट केस भी अगर आपके साथ
2 वीक्स आपसे कांटेक्ट नहीं किया जाता तो फील फ्री टू अप्रोच मी ऑन स्लैक। ठीक है, हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के आपका सेशन स्टार्ट करें। Okay, thank you. And I also attended many, what do I say, international hackathon, but I just only completed one of them, and three of them I don't know why our team could not able to solve all the problems, and we didn't submit our project. So in three नो of them, प्रॉब्लम मैम, इट इज and all of them was Pakistani, so therefore we cannot uh, submit our project. ओके, नो प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो टीम पाकिस्तानियों के साथ बनाना, ये आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी कि आप एक ऐसी टीम में जाएं जिसमें सिर्फ आप अकेली पाकिस्तानी और कोई पाकिस्तानी। ठीक है, ताकि 5 बंदों में से कोई एक बंदा तो ऐसा होगा ना जो आपको अच्छे से हलवा दे। ठीक है, और और Okay. पाकिस्तानी, Uh, हाँ, और पाकिस्तानी टीम बनाना सिर्फ उस वक्त जिस वक्त आपको कुछ ना नजर आ रहा हो, आपको लग रहा हो कि ये टाइम अब जाया हो जाएगा, तो बेहतर है पाकिस्तानी टीम बनाओ फटाफट और कोई ना कोई छोटा मोटा सा प्रोजेक्ट बना के सबमिट करवा दो। तो उस कंडीशन में आप पाकिस्तानी टीम बनाए, वरना आप कोशिश करेंगे इंटरनेशनल। but it is really hard to find a team in which we can be. Although I searched a lot, but I didn't. I could not find. I could not find any team international. एक्चुअली टीम Although ढूंढने it में is थोड़ा सा टाइम only इन्वेस्ट in. करना पड़ता है। Okay. वो किस तरीके से करना है आपने, कि उधर कुछ चैनल्स बने होते हैं जिसमें आप इंट्रोडक्शन वगैरह और सारा फाइंड द टीम, ठीक है, इस टाइप के चैनल्स बने होते हैं। उसके अंदर आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन देने के बाद आप क्या करेंगे कि थोड़ा सा वेट कर लेंगे कि कोई रिस्पांस आता है या नहीं आता। इन दैट केस की कोई रिस्पांस नहीं आया तो फिर आपको जो नज़र आता है इंटरनेशनल पर्सन, उसको आप एक मैसेज लिख लें। ठीक है, कि मेरे पास ये स्किल्स हैं और मैं ये काम कर सकती हूँ आपकी टीम में। ठीक है, और अगर आपकी टीम में किसी किस्म की स्पेस है या कोई जगह बनती है तो ठीक है, तो मुझे कंसिडर करो। तो वो मैसेज आप एक प्यारा सा लिखें और जो आपको इंटरनेशनल पर्सन नजर आता है उसको ड्रॉप करते जाए। ठीक है, और उसके अलावा जो फाइंड टीम में है उसमें आप मेंटोर्स को जितना टैग कर सकते हैं उनको टैग करें। ठीक है, इतना शोर मचाएंगे वो खुद तंग आ जाए, उसको कहेंगे भाई इसको टीम ढूंढ दो वरना ये हमें पागल कर देगा या कर देगा। ठीक है, तो इतना शोर डालें ताकि आपको टीम मिल जाए। जैसे ही आपको टीम मिले तो उसके बाद वर्क स्टार्ट करें। Okay. Thank you so much. But the Sir, thing if is you don't also mind, that just to add the जी जी, प्लीज फील फ्री टू स्पीक। I just okay. said. Is there anyone else that who want to speak beside me? No, ma'am, you may continue. Okay. I just said that I do not have the skills of the development side. So therefore, in the programming side, I am just weak in the development side. So therefore, it is very hard for me to tag to contribute into a group. एक्चुअली मैं परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता। अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, आफ्टर माय पीएच डिग्री, ठीक है, मेरा सीजीपीए जो था वो बहुत लो था, जिसकी वजह से मैं अब्रॉड नहीं जा सकता था। ठीक है, और दूसरा ये है कि मुझे लूप लगाना भी नहीं आता था, तो वो भी मैंने आई कोड पे सीखा। ठीक है, 2 साल इन्वेस्ट किए आई कोड पे। उसके बाद मैंने अपना एमएस कंटिन्यू किया फ्रॉम जीसीयू है, और वहाँ पर मैंने एमएस कंप्लीट किया। ठीक है, और कोडिंग स्किल्स अच्छी होने की वजह से क्या हुआ कि यूनिवर्सिटी का जो टीवी चैनल्स होते हैं, ठीक है, मेरा ख्याल है मैथ कम्युनिकेशन वाले होते हैं, ठीक है, जो इंटरव्यूज कंडक्ट करते हैं। तो वहाँ पे मेरा टीवी इंटरव्यू हुआ, फिर वॉइस चांसलर वगैरह और जो हमारे एचओटी थे, ठीक है, उनके साथ मेरी पिक्चर्स वगैरह बनी। अ, तो बीएस करने के बाद तक मुझे कुछ भी नहीं आता था। ठीक है, इवन के लूप लगाना भी नहीं आता था, और मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस के अंदर किया। ठीक है, तो
ये हो जाता है, ठीक है, समटाइम्स हमें चीज़ें नहीं आ रही होती। कभी कभी ऐसा होता है, मेरे वाला सीन होता है, कभी कभी किसी की डिग्री किसी और सब्जेक्ट में होती है तो उस वजह से वो उन्हें नई चीज़ें आती हैं आसानी से समझ में, बट वक्त के साथ साथ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, और समझ भी आना शुरू हो जाती है। बाकी हम पे होता है कि हम कितनी प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। तो Okay, thank you so much for motivating. वेलकम वेलकम। अच्छा, हमारा For टाइम जो है guiding. ना वो अब हो गया है, तो अब हमें सेशन एंड करना है, तो बाकी इंशाल्लाह जो भी डिस्कशन रहती है नेक्स्ट सेशन में या सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.